नमस्कार। आज 19 नवंबर 2023 संडे को जो डॉक्टर केके एचसीएफआई हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ये मीटिंग एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट की होती है, उसमें हमारे सभी एक्सपर्ट मेंबर्स का और जो व्यूअर्स डॉक्टर केके अग्रवाल जी के यूट्यूब फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन सबका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस मीटिंग में जो हमारी संडे को अल्टरनेट संडे अभी हम करते हैं 12 से 1 होती है, इसमें हम लोग वेरियस इशू ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और इससे रिलेटेड इश्यूज हम इसमें इस मीटिंग में डिस्कस करते हैं एक्सपर्ट मेंबर्स के साथ और उन पे अपने जो व्यूज होते हैं एक्सपर्ट्स के। तो आज का जो टॉपिक है वो करंट जो पर्टिकुलरली जो इवेंट होने जा रहा है जस्ट आफ्टर अबाउट 10 डेज, COP28। तो टाइटल है COP28 ग्लोबल स्टॉकटेक ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। जिसकी बैकग्राउंड देते हुए मैं स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक्सपर्ट मेंबर्स के को। वी ऑल नो द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट जो चेंज कॉन्फ्रेंसेस आर held yearly and under the framework of the United Nations Framework Convention of the Climate Change। एंड इट वाज जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इनका पर्पज है टू नेगोशिएट एंड एग्री एक्शंस ऑन हाउ टू टैकल क्लाइमेट चेंज, लिमिट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड halt ग्लोबल वार्मिंग। दैट वाज द पर्पज ऑफ दिस जो यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंसेस का है। इसी सीरीज में जो COP28 है, दैट इज 28th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज द अंडर यूएनएफसीसी, जो यूनाइटेड नेशंस का ये फ्रेमवर्क है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो दिस COP28 will be held in the Dubai, UAE from 30th November 2023 to 12th December 2023. Just about after 10 days it will be started. This is the annual event, and this COP28 will be milestone moment when the world will take stock of its progress on the Paris Climate Agreement। जो इनका मेन गोल है, एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव है, दैट विज कि टू द ग्लोबल जो है स्टॉक टेक ऑफ द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। सो वी ऑल नो दैट दी जो पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था इन द COP21 में, इट वाज हेल्ड इन 2015 में, which has the Paris Agreement, which has the three main goals. That is the keep global temperature, limit the rise of the 1.5 degree above pre-industrial level, and basically it is the aim was the keep global temperature rise to well below 2 degree and pursue to limit the rise to 1.5 degree. I mean that was the it will be better if we keep just actions under for the to rise the temperature within 1.5 degree of the Celsius of the pre-industrial levels. Second action was the adaptation to climate change and build resilience, that was. And third goal was the align jo finance to follow, I mean for these actions, that was. So COP28 will help to align the efforts on the climate actions, including measures that need to put in the place to bridge the gap of the progress to keep goal of this 1.5 degree temperature within reach. Or COP28 as a presidency, they all actions or global leaders must accelerate practical actions, because theoretical तो बहुत हो गया है and practical actions are needed at ground level on mitigation, adaptation, loss and damage and the climate finance, that was the. और COP28 presidency जो UAE है, emphasizing the need for significant progress on the enhanced adaptation actions that will resilience and the reduce vulnerability. और important, we all know that the जो COP28 हो रही है ऐसे कंट्री में हो रही है, सिटी में हो रही है जो रिच इन द ऑयल, दैट वाज दी, आई मीन वी कैन अंडरस्टैंड। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है वही जो है इसको
particularly जो oil sector को उनकी एक economy है, so how to balance that is the very very important we have to see. So COP28 definitely will be an opportunity to fast track the energy transition by building the energy system of the future while rapidly decarbonizing the energy system of today. And to keep the goal of this 1.5 degree temperature within reach, so lot of phasing down action for the supply, demand and supply of the all fossil fuel is definitely inevitable and essential. और वो आपको interest, you can say the vested interest of the parties कैसे होंगे, you can understand कहाँ पे ये हो रही है COP28. So strengthening policy to achieve the goal is required. A plan is to be basically finalized to de-incentivize the use of the fossil fuel and incentivize the green energy projects. So इसके लिए किस तरह से उनको लोगों को to encourage दी, कैसे उसको जितने भी fossil fuel based economy इसको de-incentivize करना है, इसको जितने भी पेट्रोल, डीजल और इस तरह के जो बेस्ड व्हीकल्स पे किस तरह से इसको de-incentivize करना है और incentivize जो green energy based है, green hydrogen or other kind of the EV and all that. And third, the second important just जो goal था Paris Agreement का, finance basically is critical enable of this climate action. So climate finance also must be affordable, available, and accelerate to the developing countries. Because to achieve the goal of this Paris Agreement, emerging and developing countries need the excess of $2.4 trillion of the annual investment in climate action by 2030. So a lot of money is required for the emerging and the developing countries for this. So the UN and the global Stocktake, the जो आपकी जो UN की जो global Stocktake census report also shows that much more must be done to meet the goal of the landmark Paris Agreement. So a lot of actions will be required. So every conference में there is a lot of negotiation, lot of discussions, actions are finalized, but in ground आप देख रहे हैं because of the various regions, चाहे यूक्रेन रशिया वॉर हो या रिसेंटली इजराइल और जो हो रहा है हमास एंड ऑल, तो इसके क्या इम्पैक्ट है ग्लोबल पे, इकोनॉमी में, ग्लोबल आपके एनर्जी सप्लाई पे और किस तरह से. सो लॉट ऑफ एक्शंस आर रिक्वायर्ड ऑन ग्राउंड to limit the temperature of this 1.5 degrees Celsius as per the Paris Agreement. So with this background, I'll just request our experts. So I will start today with Dr. Ravindra Palakutti because he was the additional director here in the MGICC, Mahatma Gandhi Combat Climate Change, which is the institute of under the Delhi government, and he served there. So he is a climate change background. So I'll start with the Dr. Ravindra Palakutti. Dr. Ravindra Palakutti, आप unmute कर लें please. Sir, good afternoon. Actually, I am at a different place. I am unable to speak. Hello, are you able to hear me, sir? Hello. Without video, you can share that. Hello. Yeah, without video, you can speak that. Sir, am I audible? Yeah. Okay, sir. Sir, actually, energy transition तो चल ही रहा है, and we are striving very hard to decarbonize energy sector by bringing in a lot of policy decisions in favor of renewable energy, especially solar energy. Or battery operated vehicles, EVs is also a very big step. And इस डायरेक्शन में तो बहुत अच्छा काम चल रहा है. और आई थिंक इवन ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल एंड उसका परसेंटेज बढ़ाने का भी जो कोशिश चल रहा है, उससे भी हम बहुत ही ग्रीन फ्यूल के तरफ बढ़ रहे हैं. डेफिनेटली वी आर ऑन द ट्रैक विद द वर्ल्ड कम्युनिटी इन रिड्यूसिंग द फ्यूल एमिशन, सर.
Indian government is striving very hard to do it, and policies are in support of actions on ground in this direction. And hopefully we will see more and more actions in coming days. Definitely, the net zero emissions by 2070, we may realize to the greater extent. Yeah. So thank you. We'll come back to you again if required. So thank you, Dr. Ravindra Palakutti. Yeah. So, actually, I've joined through mobile and I have some issues with the. No issues, sir. Definitely. Okay. Yeah, I understand. Thank you. I'll request now the Ravinder Kumar ji, who is a chief scientist in the CRRI, and particularly that the request will be from him because of the transport sector point of view, because we developing country or all dependent on the fossil fuel based. That was and they are importing from the Arab countries in the oil and things like. So the conference is in Dubai, in UAE, and their interest is the supply to the world more and more oil that was to the particular developing countries and whatever required. So how this conference, the COP28, which is being held in Dubai, will be the balance between the economy of the oil and also the whatever the presidency is saying that they will go away from this oil sector and go more towards the green energy projects or green energy based transport sector. So about your views, how to balance this the COP28 going to be there? First of all, thank you for giving me opportunity, and good morning to all of you. Yeah. I'd like to share some of the idea of the synthesis of report of the first global Stocktake, and that has been based on the input of different meetings. So they have proposed some long-term plan of Paris Agreement, and they have highlighted some potential area for updation and enhancing the actions and support. So regarding the scaling of renewable energy and phasing out all the unabated fossil fuel are indispensable element of just zero transition to net zero emissions. So this one is one of the important thing, like how they can scale up the renewable energy and phasing out the all unabated fossil fuel, especially as Dr. Anil Kumar has said that it's being held in the Dubai. So who are the especially in Middle East, all their economy is based on the fossil fuel. So in that case, how to go about the renewable energy and the energy system mitigations measures, what they are saying that it could account for 74% of total global mitigations in reaching net zero GHG emissions. And from 2010 to 2019, the renewable energy trends were highly promising, with a notable reduction in the unit cost for solar energy, wind energy, and lithium ion. So that has been highlighted by the report. And this has resulted in significant increase in their deployment with solar and electric vehicles, witnessing the deployment growth rate of 10 times and 100 times respectively. Especially for solar, it's 10 times, and for electric, 100 times. Though the rate, cost, and benefits vary across the region. So if you look in terms of deployment, the electric vehicle has the significant increase in deployment. So, and the Middle East also will be going for that to take this technology, the solar and electric. And strengthening of power grids and storage is critical, especially when we are going for solar and electric, to unlock the, especially when there will be load on the grid. So we have to see how we can best feed from the renewable energy sources.
to provide the clean power as a transportation energy. So that is one of the important recommendation that from the source, especially the grid source, they can be dependent on the renewable energy sources. They have also suggested measures to implement some of the important transformation in industry, especially with the transportation industries, so that we can reduce the emissions. And reducing the industrial emissions, which is make up of 25% of global emissions, and that will require the demand management. Especially, we have to look into the what is the demand and how we can reduce the global emissions, and significantly increasing energy efficiency in all the sectors. So this is the one of the important point. Like if you increase the energy efficiency, do the electrification, and also do the innovation in hard to abate subsectors, and that will be greatly help for the emission reductions. So for that, there are ambitious implementations plan is there that can save the cost as well as benefits. Apart from that, the share of emissions from the cities, especially different cities, is estimated around 67 to 72% of global emissions. When using consumption based on the accounting that include indirect emissions outside urban. So reducing emissions from the city will involve a smart urban planning. So they have used this word, smart urban planning. Why smart urban planning? The idea is to reduce the and manage the waste, as well as the making the cities more compact, walkable, and efficient. Just to listen this word, what they are saying: more compact, more walkable, and more efficient. Why? Because the share of emissions from cities is estimated to be 67 to 72% of global emissions. So what they are saying, like if you have the smart urban planning, that can reduce the transportation trips, just making the walkable things. Or smart urban planning also include like changing in the land use patterns. If you see that shop can be down, and on the up there could be the residential, so that we can reduce the trip. Transit oriented development, that is another area where we can reduce the trip. So this is the one of the major agenda to go for the smart urban planning, and local authority and other sectors may take measures to co-locate the housing and jobs. So what I am talking, like transit oriented development planning, like in Delhi near AIMS, they have developed the new colony and it's very near to the AIMS metro station. So these type of things will have the co-locations of housing as well as jobs, and this will increase the electrification and transition to low carbon energy sources, especially increasing the resilience through planting more tree near the buildings, which accounts for around 6% of the global emissions. So this is the another area where when we are going for the building layout plans and all, so we have to go for the planting more tree for increasing the resilience. And both existing and yet to be built buildings, like newly developed cities or newly developed plant, can be net zero emissions by mid-century 2050. So this is the another milestone they are proposing, like 2050. They have the vision like it should be net zero city, in fact. So what is the way? If they use the low carbon construction material, especially when we are constructing the building, or so we can go for the low carbon construction material, and also we can reduce the energy demand in the building when we are constructing.
and implement the mitigation option in the design, construction, and use the retrofit. So whatever material is there, retrofitting is one of the best options to recycle the material or reuse the existing land use plan. So what they are saying that for sub-national leaders and community are the central to the waste management and should add measures that address the CH4 emissions, methane emission in treatment of solid and waste water. So overall, it's a smart urban plan which will include the net zero emissions for whole city, and there are several ways that in that the construction of material with low carbon is one of the things, and apart from that, transport is one of the things where they are going for the walking and eco-friendly mode. And transportation currently contribute about 15% of global GHG emissions. So phasing out internal combustion engine, how we can phase out? We can phase out using the electric vehicle, offer that a greater mitigation potential in the sector. So in addition, demand side interventions such as shifting transport mode, it's a very important. So how we can shift the transport mode? First is the our smart urban planning, and then shifting transport mode like going for walking and using the more public transportation system. That will be the essential part of the rethinking the how we move across the road, or how we think about the mobility. So that is one of the important part, like what we are using the current mode that has to be shifted either walk or public transportation system. And rapid reducing emissions from the international shippings. Shipping is also transport mode where a lot of cargo and goods are being transported. So international shipping, aviations, and freight transportation, and that requires the international cooperation on sustainable fuels. They are saying, okay, we cannot stop the international shipping, we cannot stop the aviation industry, we cannot stop the freight transportation, but can we use the sustainable fuel, energy efficient design, data analytics, and other solutions. So this is the way where we can again reduce the transportation based GHG emissions. And next one is like energy efficiency and demand management. That is the important way of reducing the emissions with cost saving over the short payback period. Energy conservation also deserves continued attention, especially in text with high energy consumptions. Energy storage technology, what they are focusing, like energy storage technology and demand side measure can help stabilize and variability in renewable energy. So this is the one of the challenges, like energy is being generated, then how to store it, how to distribute it, how to manage the demand. So again, what they are saying that mitigations measures will be an important factor for achieving any success in Paris Agreement goal. While pledging for mitigation actions and relevant international cooperations by non-party stakeholders have accelerated significantly in response to Paris Agreement, and efforts are still far being placed, what we have placed or implemented at the level needed. Sometimes some estimates has been given for the mitigation action suggested that non-party stakeholder could reduce the emissions by 20 gigaton or CO2 equivalent in 2030. Although cares needs to be taken in making any assumptions. So international cooperation is one of the major agenda that is going to be help in this conference, and especially from the transport and renewable energy and mitigation, all the mitigations at international level. On the emissions from the international transport, the International Maritime Organization has set the goal with reaching the net zero GHG emission by 2050. So what I told, like in shipping or cargo for international shipping, they have also set up an agenda.
Even the International Civil Aviation Organization has set a goal consistent with reaching the net zero by 2050. So it remains important to understand whether how these efforts are additional to action within the NDC, and rigorous accounting is needed to avoid the potential overlap across within the initiative. So it is essential to unlock and redeploy trillions of dollars to meet the global investment needs, including a rapid shifting financial flow globally to support a pathway low GHG emissions and climate resilience development. So they are also talking about how the global investments, how the global world will take care about the investment. And what they are saying that annual average of 803 billion invested in 2019 to 20, which is 31 to 32% of annual investment needed to reduce the global temperature rise. And there is need for growth in the finance flow. Still, there is opportunity how we can put more finance towards the building infrastructures in sustainable transportation, as well as growth in the adopting the financing. So existing flows are small in comparison with overall investment needs. So many investment still support infrastructures that locks in high emissions or that is designed for resilient to climate impact. So whatever current inflow of financing is there, that is not adequate. So all these points, again, they are going to discuss in this agenda. So apart from what the current economy is in the Middle East or Gulf country based on the fossil fuel, I think they have to go for the smart urban planning in coming futures and shift the entire way of how we move in the roads, or how we do the mobility, and how we go for the transportation, either it is aviations or it is marine sector or local transport or within the city transport. So that's what is the major points has been taken from the report from the first global stack. So thank you very much. This is what is the summary from the report. Thank you. थैंक यू डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, आपने बहुत ही एक ब्रॉड रेंज में कवर करते हुए मोर फोकस टू ऑल दी transport sector, including the aviation, shipping, and cargo. You have covered that, and very important is because this is the sector which is most important. And in my view, I mean, that was because this event is being held in Dubai. A lot of people must be flying from the different all of part of country. It should be better, should be in hybrid mode, or maybe this can be planned in the online mode. I mean, in future, because this is not necessary to all people they assemble in the Dubai or somewhere. It should be more focused to. I mean, if we event has to be, or event also has to be net zero. That was I mean, that's was the yeah. And phasing to from for the demand and supply of the fossil fuel, lot of action, though global leaders will negotiate that, but lot of action will be required at the local level. That was the so people participation and people involvement. I mean, this is the I mean, kind of ownership is to require that this climate change is not only I mean impacting the country, impacting you at the local level also. So this is very important. A lot of actions for moving away from the fossil fuel based, going for a green fuel based mobility, or for particularly the NMT, non-motorized vehicle towards. This is very required, because this aggressive people participation still is not there. So this a lot of actions are required from the people point of view here, and the negotiations and things like. So I mean, a lot of will be discussed in during the COP28. So thank you, Dr. Ravinder, again, and definitely will discuss further. I'll request now the Neeraj Tyagi ji, who is on all subject. He's studying a lot and then giving his views. So I'll request Neeraj Tyagi ji on his views on today's COP28 topic.
जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। एक तो ये जो फोरम है इसने मुझे कवि से और सेफ्टी प्रोफेशनल से एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट बना दिया। तो इस मंच का मैं बहुत ही आभारी हूँ। एक नई फील्ड और उसमें मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक COP28 का है और इसमें जो मेजर फोकस है वो दैट विल बी विच विल इंक्लूड एट द समिट, ये दुबई में होगी। और सबसे बड़ी बात जो आपने मोटराइज की थी डॉक्टर नील कुमार जी ने, कि मोटराइज को रिड्यूस किया जाए व्हीकल्स को। तो जो अल जबेर है वो तो फॉसिल फ्यूल की जो बड़ी कंपनियां हैं उनके प्रेसिडेंट चेयरमैन भी हैं। तो ये बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि उनको एक प्रेसिडेंट बनाया गया है। और ये तो इसी तरह से हो गया जैसे कोविड में अगर आप एंटी वैक्सीन की एक लॉबी बनी थी, उसको जो है वैक्सीन वाले उसका चेयरमैन बना दिया जाए। तो ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल सी चीज है कि वो कैसे फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करने का एक प्रस्ताव पास करवा पाएंगे इस COP28 में। और जहां तक टेम्परेचर राइज पेरिस एग्रीमेंट का है, वो कह रहे थे 1.5 तक हम लाएंगे टेम्परेचर राइज को। तो मुझे तो लगता है 2100 तक हम 2.8 का राइज हो जाएगा। जिस तरह से हम गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बड़ा एक मुश्किल है। इसमें हमें सबको मिलके काम करना होगा। जो ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट आई है जो सितंबर में रिलीज हुई है, उसमें कंक्लूड किया गया है कि वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू मीट द गोल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। एंड इन अर्ली अक्टूबर जो UNFCCC सेक्रेटरीट है उसने भी सिंथेसिस रिपोर्ट दी है। उसमें भी बड़ी उन्होंने मुश्किलों का उन्होंने दिखाया है कि कितनी मुश्किलें आ रही हैं गोल्स में, क्योंकि सब मिल के काम नहीं कर पा रहे हैं। इंटरडिपेंडेंस बहुत जरूरी है इसमें। आइसोलेशन में हम एनवायरमेंट के लिए नहीं लड़ सकते। जुलाई 2023 में COP28 के जो प्रेसिडेंट हैं जबेर साहब, उन्होंने डिक्लेयर किया जो पैराडाइम शिफ्ट्स हैं जो 4 तरह की, वो डिक्लेयर की कि फास्ट ट्रैकिंग द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस अरेंजमेंट्स जिसके लिए इंडिया बड़ा लड़ता रहा है, द रोल ऑफ पीपल एंड नेचर इन क्लाइमेट एक्शन, and ensuring inclusivity at the summit, including for women, indigenous peoples, local communities, youth, and sub-national actors. How these aims can be achieved under a presidency that is heavily investing in fossil fuels and places severe restriction on freedom of speech also. वहां पे जो सिविल एक्टिविस्ट है उन पे बैन लगाया जाता है, यूएई में भी, इजिप्ट में भी, और वही प्रेसिडेंट बने हुए हैं। Freedom and assembly remains a controversial striking point. And one topic likely to attract attention of COP28 is progress on a fund for loss and damage, into which developed countries would pay to support developing countries in dealing with irrevocable losses caused by climate change. Agreement to establish such a fund was a hard-fought success for developing countries। एटलीस्ट जो COP27 की समिट शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी, वहां पे ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। बट इट्स एफिकेसी विल डिपेंड ऑन हाउ इट फंक्शंस एंड हाउ मच मनी इट कैन अट्रैक्ट। द एग्रीमेंट एट COP27 was to establish the loss and damage fund within 2 years. So with this deadline still in the future, it may not be high on the agenda for all government negotiations. However, civil society groups in developing countries are likely to argue that progress on establishing the fund has been inadequate and to call for greater urgency and redoubled efforts. Many environmental groups and commentators have expressed concern, जो ये मैं पहले भी ये पॉइंट उठा चुका हूं, the appointment of Sultan Al Jaber as COP28 president, despite the fact he is CEO of one of the world's largest oil companies and one which continues to invest heavily in extraction of fossil fuel, has come under particular criticism. Greenpeace ने भी कहा है कि deeply alarmed by the appointment, stating there is no place for fossil fuel industry in the global climate negotiations. Christian Aid है, उन्होंने भी बोला है कि the conflict of interest is obvious and that having an oil baron running the global climate talks is like putting an anti-vax conspiracy theorist in charge of the response of COVID-19.
Lekin Al-Jaber, for his part, has pitched himself as a figure who can keep fossil fuel companies at the table in negotiating a phase down in oil and gas use, language that remains contentious with many countries and campaigners pushing for a firmer deadline for the phase out of fossil fuels. Civil society groups from around the world have also raised concerns over the UAE's restrictive laws around protest and freedom of expression, especially given that large public demonstrations are typically held in the host city during climate COPs. In early October, the United Kingdom sought assurances from the UAE at the United Nations over how the summit host will ensure freedom of expression and assembly around COP28. जहां तक साउथ एशिया की बात है, इंडिया की बात है, इंडिया और जो दूसरे कंट्री हैं, as well as developing country the world over, will be looking principally for one thing at COP28, that is money, and lots of it. The issue of financial point has been taken up. It is a most responsible climate change to support those facing the worst impacts and highest adaptation costs has dogged climate negotiation for almost 2 decades. Developed countries have consistently failed to match the pledge made in 2009 to provide $100 billion per year in climate finance to support climate actions in developing countries. And even this is far below the sum poorer countries will need to decarbonize their economies and adapt to the impacts of climate change, now estimated to be in the trillions of dollars per year. Though the Summit for a New Global Financing Pact held in Paris in June 2023 brought to the fore issues such as developing countries paying more to service their debts than they receive as climate finance. Developing countries demanded a restructuring of the World Bank and its affiliates, more concessional and grant-based financing, and debt cancellations for the least developed countries. These issues are almost certain to come up again in COP28. Global Stocktake highlights urgent need for inclusive policymaking, and the first accountability report on progress made under the Paris Agreement points to serious shortcomings and calls for far greater ambition from the world's governments to prevent climate breakdown. The adoption of Paris Agreement in 2015 by 196 countries represented the most ambitious statement of intent ever made at the global level to combat the climate crisis. A key element of the Paris Agreement is the Global Stocktake, a process which evaluates progress made towards climate targets. तो इन ब्रीफ मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पार्टिसिपेशन सभी का जो इंटरडिपेंडेंस वाला कंसेप्ट है उसको एनहेंस किया जाए, आपस में कोऑपरेशन हो, और जो ग्रीन वॉशिंग है, जो हम फॉल्स डाटा देने का एक चलन हो गया है कॉर्पोरेट कल्चर में, उसको मॉनिटरिंग के लिए उसके लिए स्टेप्स उठाए जाएं और सिर्फ ऑन पेपर, इन स्पीच, इन सेमिनार जो एक शोपीस की तरह ना रह जाए ये एनवायरनमेंट के लिए जो हमारी लड़ाई है. इतना मेरा सबमिशन है. थैंक यू नीरज जी, थैंक यू सो मच. आपने काफी ब्रॉडली कवर किया एंड डेफिनेटली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो सभी जो जानते हैं कि गोइंग टू बी डेफिनेटली, बिकॉज इसका अगर जो उसका प्रोड्यूसर है अगर उसी से कहे कि आप कंट्रोल करें, दैट वाज दी सो वेरी डिफिकल्ट फॉर आई मीन टू बैलेंस हैबिट बिटवीन, बट एनीवे दिस इज या सो थैंक यू. और आज हम बस एक स्पीकर को लेके, बिकॉज आज मैच भी है और लॉट ऑफ सब लोगों को थोड़ा सा जल्दी में चाहेंगे, तो मैं आज है श्याम गुप्ता जी से, इफ यू कैन जस्ट अवर लास्ट स्पीकर टुडे, कुछ अगर अपने व्यू एक्सप्रेस कर सकें आज के सब्जेक्ट पे, तो आई रिक्वेस्ट एसके गुप्ता जी. या ओवर टू यू एसके. या थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर गिविंग सो मच अफेक्शन टू मी. बट मेरा ये मानना है कि ये सब जो इस तरह बड़े बड़े जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन के मूवमेंट्स चलते हैं, ये लगता है पब्लिक की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए होते हैं. जो जैसे इन्होंने नीरज जी ने कहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, आई फुली एग्री कि
ये जिनके इंटरेस्ट जो है हर्ट हो रहे हैं वही इस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि पब्लिक की और वर्ल्ड की अटेंशन उनके से हट जाए और वो लोग जो है कुछ और सोचने लगे, फालतू की बातें डिस्कस करने लगे और उनको इस किसी काम में उलझा दिया जाए। तो ये इस तरह के सम्मेलन से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब हम अपने लोकल लेवल पे यूनिटी डेवलप नहीं कर सकते, हम गांव की पंचायत भी हमारी इफेक्टिव नहीं हो पा रही है सबको यूनाइट करने में, तो इतने बड़े लेवल पे वर्ल्ड के फोरम पे इतने देशों को यूनाइट करना बहुत ही मुश्किल काम है। और दूसरा ये उम्मीद करना कि वो अपनी कमाई में से हमें कुछ देते रहेंगे और हम अपने उसमें से मजे उड़ाते रहेंगे, ये बड़ा अनथिंकेबल सोल्यूशन से है। अगर कुछ करना ही है वाकई इस दिशा में तो ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे कंजम्पशन कम हो। और उससे से देखिए पहले खाली हमारे वर्ल्ड में या देश में पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती थी। पोल्यूशन की प्रॉब्लम इसलिए होती थी क्योंकि हम एमिशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और आज भी नहीं कर पा रहे। अब क्लाइमेट चेंज इशू आ गया। क्लाइमेट चेंज जो इशू है दैट इज डायरेक्टली लिंक टू कंजम्पशन पैटर्न, इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एंड गुड्स। अगर हम तब तक एनर्जी के कंजम्पशन को कम नहीं करेंगे, ये क्लाइमेट चेंज में इफेक्ट नहीं आएगा। अब जब तक उसको कम करने के लिए छोटे छोटे प्रयास, जैसे अभी हिंदुस्तान ने, इंडिया ने, हमारे मोदी जी ने इंटरनेशनल योगा एक पॉपुलर करा दिया है। अब सारा वर्ल्ड योगा करता है। तो क्या हमारा देश जो थिंकर्स का, फिलोसफर्स का देश है, वो दोबारा से एक ऐसा मैसेज वर्ल्ड में फिर नहीं करा सकता कि भाई हफ्ते में एक दिन कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, अपनी एनर्जी कम तो करो, कंजम्पशन कम तो करो। ये शायद लोग मानने लगे कि अच्छा चलो भाई ये हिंदुस्तान ऐसी बात कह रहा है। पैसा कोई नहीं देगा, आप भीख मांगते रहो, कोई आपको मिलेगा नहीं। आप लड़ते रहो कि देखो उन्होंने इतने कमिट किए थे, $100 बिलियन, उन्होंने $1 बिलियन भी नहीं दिया। अब मांगते रहो कोई, क्योंकि मैन जो आदमी की नेचर है ना, वो ग्रीड और होर्डिंग टेंडेंसी से ड्रिवन है। आदमी इतने ग्रीड में फंसा हुआ है और उसके ऊपर से उसकी होर्डिंग टेंडेंसी जो है वो उसको दूसरी तरफ जाने ही नहीं देंगी। आप सोचते हो कि वो बेसिक नेचर बदल जाए आदमी की, वो नहीं बदलेगी। हाँ, अगर आपने जैसे योगा करवाने के लिए हर एक को मजबूर कर दिया, आप हो सकता हो ऐसे ही आप हफ्ते में पहले एक दिन गाड़ी बंद करवाओ, फिर 2 दिन बंद करवा दो, तो हो सकता है उससे कंजम्पशन कम हो जाए। इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बजाय ये टेक्नोलॉजी से इस बारे में बात करें, वो लोग बात करें जो वे ऑफ लाइफ को थोड़ा बदलवा सकते हो। हमें वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ फिलोसफर्स, थिंकर्स, संत महात्मा, जो इस तरह के हमारे अंदर अच्छे विचार पैदा कर सके। ये विचार बदलने से ये सब कार्यक्रम होगा। टेक्नोलॉजी से और ये मैनेजमेंट एक दफा आप खराब कर दो, उसके बाद में आप लोगों को लगा दो कि अब इसका मैनेजमेंट करो, ऐसा करो सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो जाए। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है? आप तो एक तरह से कंजम्पशन बढ़ाए चले जा रहे हो, दूसरा कह रहे हो कि नहीं, इसको ऐसा कंजम्पशन को ऐसा करो जो सस्टेनेबल हो जाए। भाई आप नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करे जा रहे हो, नेचर को रोनते जा रहे हो, एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज नहीं करना चाहते, आप दूसरी ऐसी एनर्जी को यूज करना चाहते हो जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उसके। तो हमें बहुत सीरियसली ना इसको हमारे जैसे देश को लीड लेनी चाहिए इसमें, इस तरह के डेलीगेशन में, और नॉन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ऑफर करने चाहिए वहां पर, जो शायद ज्यादा कामयाब होंगे और सोसाइटी के लिए और वर्ल्ड फोरम के लिए ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। मेरा तो ये मानना है अनिल जी। मैं पैसे में हो सकता है आप क्लियर होता हूँ, लेकिन आई एम ओनली सीइंग दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर आई थिंक 4-5 decades now and nothing has changed. Yes. So this is my submission, sir. थैंक यू सो मच गुप्ता जी। एक्चुअली दिस इज द प्रैक्टिकल जो हम बात करते हैं कि हमें प्रैक्टिकल जो वहां जाके दुबई में निगोशिएट करना है, डिस्कस करना है, दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स दैट वी नीड टू बी अडॉप्ट बाय एवरीबॉडी ग्लोबली। तो जैसे हमारा लाइफ का मिशन लाइफ का मोदी जी ने जो एक्शंस हैं उसमें 75 एक्शंस हैं, उसमें सभी इसी तरह के हैं, हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम बेस्ड और इस तरह की वैल्यू बेस्ड इस तरह के कंजम्पशन रिडक्शन के हैं। तो मिशन लाइफ एक अगर इंटरनेशनली अडॉप्ट हो जाए, जो लास्ट टाइम इंक्लूड हुआ था, अगर उसको भी अगर और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए ग्लोबली, तो दैट विल हेल्प एक्चुअली, दिस इज द एक्चुअल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जी। तो मैं आज जो है, बिकॉज टाइम हमारे पास, आज सब लोग अभी हमारा इंडिया का और मैच भी है वर्ल्ड कप का, और मैं इस टॉपिक को, बिकॉज अभी ये 30 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी COP28, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट मीटिंग में भी। और भी हमारे स्पीकर्स आज जो है, उसका मैडम है, अंकित हैं, और भी लोग बहुत नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ आई थिंक दिस सिस्टम मैच की वजह से, तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।
और इसमें क्या देखते हैं उसी बीच में कि क्या उनके नेगोशिएशंस क्या कर रहे हैं। हो सकता है होप फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छे नेगोशिएशंस हो, चाहे वो एडाप्टेशन इसके लिए हो या इसके लिए क्लाइमेट इसके फाइनेंस के रिलेटेड हो या और भी कोई एक्शंस हैं अगर बेनिफिट होते हैं तो डेफिनेटली वी ऑल होप फॉर द ग्लोबल लीडर्स जो नेगोशिएट करेंगे, एक्शन फाइनलाइज करेंगे, जो कंटिन्यूएशन ऑफ दी जो प्रीवियस कॉप्स हैं। तो आई थिंक जो इनके पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स पे अगर होता है तो डेफिनेटली वी होप फॉर बेस्ट, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट मीटिंग। तो आज मैं सभी जो हमारे स्पीकर्स हैं, जो डॉक्टर रविंदर पालाकोटी, डॉक्टर रविंदर कुमार, नीरज त्यागी जी, श्याम गुप्ता जी और सभी जो आज एक्सपर्ट मेंबर ने ज्वाइन किया, सबका धन्यवाद करते हुए, व्यूअर्स का धन्यवाद करते हुए, ये डॉक्टर KK HCFI तरफ से हम सबका धन्यवाद करते हैं। और आज सबसे इम्पोर्टेंट है कि करीब-करीब ये डॉक्टर जो KK HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इसको करीब-करीब मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं। इसमें जो हमारी जो पर्टिकुलरली जो एक्सपर्ट ग्रुप एनवायरनमेंट हमारा जो है ये ग्रुप है और इसका ऑल मेंबर के एक्सपर्ट मेंबर्स के सहयोग से ये चल रहा है। उनकी डॉक्टर KK अग्रवाल की लेगेसी को हम सब मिलके एटलीस्ट बहुत कुछ अगर एक्शन नहीं क्रिएट कर सकते तो अवेयरनेस तो हम बहुत कुछ क्रिएट कर ही रहे हैं और पीपल पार्टिसिपेशन अगर होता है अवेयरनेस से तो ये उनके लिए एक डॉक्टर KK अग्रवाल के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। हम लोग उसको आगे ले जा रहे हैं। तो सभी का अगेन धन्यवाद करते हुए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बाकी लोगों जिनको आज नहीं ले पाए